Hello everyone. The topic for today is deadlock in operating system. So before getting into the definition of what is a deadlock, I explain you the concept with the help of an example. Let us suppose now that there are two processes P1 and P2 and there are two resources R1 and R2. So the processes are represented with circle and the resources are represented with rectangle. Now let us suppose that both the process P1 and P2 require both resources R1 and R2 to finish the allotted task. At any given time, P1 requests for the resource R1 and P2 requests for resource R2. So you can see that the arrow is from the process towards the resource. This means that the process is requesting the resource. Now if the resource is free, then we can allocate this resource to the process. So now R1 and R2 are both free. This means that these requests can be granted. Hence R1 is allocated to P1 and R2 is allocated to P2. P1 ने रिक्वेस्ट किया R1 का, P2 ने रिक्वेस्ट किया R2 के लिए. क्योंकि दोनों रिसोर्सेज फ्री थे, हैंस हमने एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी, विच मीन्स दैट रिसोर्स R1 is allocated to P1 and resource R2 is allocated to P2. So the change of direction is important. Next, P1 requests for resource R2 and P2 requests for resource R1. अब P1 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट करी और P2 ने R1 के लिए रिक्वेस्ट करी. Now the question is, can we grant this request? So we cannot grant this request because R1 is held by P1 and R2 is held by P2. रिक्वेस्ट P1 R2 के लिए कर रहा है जो कि P2 के पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सिमिलरली P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए जो कि P1 के पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. नाउ द क्वेश्चन इज, can this request be ever fulfilled? So your answer is no, because both P1 and P2 require the allocated resources and hence they are not going to preempt them and will keep on waiting for the requested resource. Okay, so P1 को कभी भी R2 नहीं मिलने वाला because P2 उसको रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना काम फिनिश करने के लिए R2 और R1 बोथ दोनों चाहिए. सिमिलरली P1 ने R1 होल्ड किया हुआ है, वो उसको रिलीज नहीं करेगा क्योंकि उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए वो दोनों R1 और R2 चाहिए. सो अ सिचुएशन वेयर द रिक्वेस्ट विल नेवर बी फुलफिल्ड will lead into a deadlock state. So this is a deadlock state. Now just remember this diagram and we'll go back to the definition part. Now what is the definition of deadlock from this scenario? So deadlock is a situation which occurs when a process or a thread enters a waiting state. So P1 requested for R2, but since R2 was held by P2, so P1 has entered into a waiting state because the resource requested is being held by another waiting process. Now R2 was held by P2, which again was waiting for R1 held by P1. So situation where a thread enters the waiting state because the resource requested is being held by another waiting process, which in turn is waiting for another resource held by another waiting process. So P1 रिक्वेस्ट कर रहा है एक रिसोर्स की जो P2 एक वेटिंग प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है. P2 in turn is waiting for a resource R1 जो कि P1 एक waiting process ने hold किया हुआ है. Now, if a process is unable to change its state indefinitely, now P1 and P2 will not be able to change their state indefinitely because the resources requested are being held by another waiting process. Now, such a situation is called deadlock. Now, there are four conditions, necessary conditions, which should be satisfied at all times for the deadlock to occur. The four conditions are mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. ये चारों conditions सेम टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा. Now what do you mean by mutual exclusion? Mutual exclusion means that only one process can use the resource at any given time. Means अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, सो R2 एंड R1 दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन ऑफ द प्रोसेस. जब भी R2 जो है वो शेयर्ड रिसोर्स नहीं है. फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, प्रिंटर इज़ नॉट अ शेयर्ड रिसोर्स.
बट जो हार्ड डिस्क है वो एक शेयर्ड रिसोर्स है, तो जो मेरा रिसोर्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, दैट द रिसोर्स कैन बी यूज ओनली बाय वन ऑफ द प्रोसेस. Second condition is hold and wait. Hold and wait means the process should be holding one resource and should be waiting for another resource. So now look into P1. P1 is holding R1. Okay, P1 is holding R1. That's why the arrow is from to R1 towards P1 and is waiting for R2. Similarly, P2 ने होल्ड किया हुआ है R2 को एंड वेट कर रहा है R1 के लिए. सो दिस इज होल्ड एंड वेट. सो जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है डेडलॉक में, उसके पास एटलीस्ट एक प्रोसेस होल्ड में होना चाहिए और एटलीस्ट वो एक प्रोसेस के लिए वेट कर रहा होना चाहिए. थर्ड कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन मीन्स द रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम अ प्रोसेस अंटिल इट हैज़ फिनिश्ड इट्स टास्क. यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैं R2 P1 को क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज P2 इज नॉट रेडी टू प्रीएम्प्ट R2. नो प्रीएम्पशन, राइट. P2 कह रहा है कि मैं R2 को रिलीज नहीं करूँगा जब तक मेरा काम फिनिश नहीं हो जाता. ठीक है, अगर वो रिलीज करेगा नहीं तो P1 की टर्न कभी आएगी नहीं रिसोर्स को ऑक्यूपाई करने की, राइट. सो द थर्ड कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन. फोर्थ कंडीशन इज सर्कुलर वेट. सो इफ देयर आर n number of processes, then there must exist such a state such that P0 is waiting for the resource held by P1, P1 waiting for resource held by P2, so on, and Pn waiting for the resource held by P0. एक सर्कल बनना चाहिए कि जैसे P1 वेट कर रहा है रिसोर्स R2 which is held by P2. Similarly, P2 is waiting for the resource held by P1. ऐसे ही अगर सर्कल में दो प्रोसेस हो सकते हैं, 3, 4, there can be n number of processes. So that is circular wait. So these four conditions should be satisfied for the deadlock to occur. Next, how you can identify that system is in a deadlock state or not. So we can use a resource allocation graph which will help us to identify whether the system is in deadlock state or not. तो how to make a resource allocation graph, यहाँ हमने determine कैसे करना है resource allocation graph से. There are certain points to remember. Now resource allocation graph is a directed graph. तो आपने डायरेक्शन देनी है इसमें. It will have two things, vertices and edges. Vertices में क्या होगा, प्रोसेस होंगे और रिसोर्सेज होंगे. एज में क्या होगा, दो टाइप के एज हो सकते हैं, रिक्वेस्ट एज. रिक्वेस्ट एज होगी फ्रॉम द प्रोसेस टूवर्ड्स द रिसोर्स एंड असाइनमेंट एज इज फ्रॉम द रिसोर्स टूवर्ड्स द प्रोसेस. जो मैंने अभी आपको ग्राफ प्रीवियसली दिखाया, दैट इज अ resource allocation graph. So there you can see that there were two different kind of edges. The process is represented by a circle and the resource is represented by a rectangle. It might happen that there are multiple instances of a resource. जैसे resource आपका प्रिंटर है, अगर आपके पास दो प्रिंटर हैं, then you have two instances of printer. तो आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, there will be dots, those many dots as the number of instances. Now this is an example of resource allocation graph, not complete, but we'll see whether the system gets into a deadlock or not. So अभी हमारे पास 4 resources हैं, R1, R2, R3 and R4. R1 और R3 there is only one instance, R2 is having 2 instance and R4 is having 3 instance. 3 process हैं, P1, P2 and P3. Now the question is, P1 request for R2, can this request be granted? सो P1 ने रिक्वेस्ट करी रिसोर्स R2 के लिए. सो माई एरो रिक्वेस्ट एज इज टूवर्ड्स द रिसोर्स. सिंस both the instances are free, this means we can satisfy this request. सो हमने एरो चेंज कर दिया. नाउ द एरो इज टूवर्ड्स द प्रोसेस फ्रॉम द रिसोर्स. ठीक है, जो मैंने इंस्टांस एलोकेट किया है, मेरा एरो उस इंस्टांस से प्रोसेस के टूवर्ड्स है. नाउ P2 रिक्वेस्ट फॉर R1. Again the resource is free, so we allocate it to P2. P3 request for R3. Again the resource is free, so the request is granted. P2 request for R2. P2 request for R2. So since we have still one more instance free, this means we can allocate the other instance to P2. Next P1 ने request किया R1 के लिए. Now
इज एनी इंस्टांस ऑफ R1 फ्री? R1 का एक ही इंस्टांस है, वो ऑलरेडी P2 के पास है, सो वी कैनॉट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट. नाउ विल देयर बी डेडलॉक? क्या डेडलॉक हो रहा है यहाँ पे? द आंसर इज नो. सिंपल. एक सर्कुलर वेट, आप एक कंडीशन चेक कर लो कि सर्कुलर वेट बन रहा है, सर्कुलर वेट यहाँ नहीं है, साइकिल नहीं बन रहा. ओके, दिस मीन्स देयर इज नो डेडलॉक. नेक्स्ट, P2 request for R3. Can we grant this request? No, because R3 का रिसोर्स और R3 का कोई भी इंस्टांस फ्री नहीं है. Still there is no deadlock, no cycle exist. Next, P3 request for R2. So P3 request for R2. Can this request be granted? No. Will there be a deadlock? Yes. So we can see that now, due to this request, the system has entered into a deadlock state, because you can see two cycles in this. Cycle 1 is P1 R1, P2 R3, P3 R2 and P1. So this is one of the cycles. There is one more cycle, P2 R3, P3 R2 and P2. So this is the second. So this is the second cycle. Since there is at least one cycle in the graph, this means that the system has entered into a deadlock state. So now there is one practice question for you. So you can share your answers whether the system is in a deadlock state or not in the comment section. So here are a few MCQ questions for you to practice. Share your answers with others also in the comment section. So I hope that the basics of deadlock, what is a deadlock and how to determine the deadlock in the system, is clear. Next, we are going to discuss how to prevent deadlock in the upcoming lecture. So the PPT link is mentioned here. You can go to the site and download the link. So please don't forget to subscribe so that you do not miss any upcoming videos. Thank you. See you next time.